everyone. I'd like to welcome you all to the closing session of this year's Indus Conclave. Thank you all for being a very engaging audience during all our sessions yesterday and today, and for being a great sport and patiently waiting for the session to start. We're slightly off schedule because of the last session. Just before we begin, I introduce our esteemed panelists. I'd like to thank the entire team of Punjab Group Dunia for helping me organize this event. The board of advisors who've been exceptionally grateful, and all our panelists and guests, some of them who've flown in from cities outside Lahore and from other countries just to be here. And on this panel, one of them is Meera, who was here for our session yesterday and has very kindly joined us today for the entertainment session as well. Which brings me to our last session today. It is on the trajectory of the Pakistani entertainment industry, and we're joined by a very diverse and accomplished group of individuals. I'll be starting with introducing my panelist on my extreme left, Madam Uzma Beg, who's a very, again, I don't think I need to say more. You guys already know her and must have seen her a lot on your screens. And I could say the same about Wase, Meera, because I don't know what else to say. Perhaps someone you've not seen on the screen very often is the person who made an amazing film a few years ago, which was also Pakistan's official entry for nomination for the Oscars, if I'm correct, Tamil, that year. Lal Kapoor. So he's he's the producer of the film and the founder of Leherkai Films. And the session is being moderated by Arsalan. He's the founder of the Desi Collective, is a former South Asia fellow, who's been mentored by Fatma Bhutto for a book that he's working on. Thank you so much, Arsalan, for agreeing to moderate the session, and I hand things over to you. Perfect. Thank you so much, Raza. And thank you for our panelists for your time today. I think this panel is very timely given that there's a lot of buzz about the new film that's released, and I think it's a good time to talk about the entertainment industry की future किस तरह और कहाँ जा रही है. So if we talk about this past year, we've had films like Joyland make effects around the world, and we've had our own films sort of ज़्यादा films बनने लगी हैं पाकिस्तान में. So as a broad general topic of discussion, when we talk about the entertainment industry, I'm going to talk about both dramas and films because we have experience on our panel for both. So, आप लोग, if you could just shed some light about how do you feel about अभी तक 2022 किस तरह गया है, and just where do you hope to see, after this year, how our film industry grows and grows. So, I'll start with drama, and then you can go down. I hope everyone can hear me. I think 2022 has been 2022 is coming after COVID pandemic, and it makes it an essential year for us to get people back into the cinemas. जो कि एक बहुत slow movement हुई है ever since मैं Indus Conclave में बुलाया तो मैं दरियाए सिंध के बारे में सोचना शुरू किया, and just like दरियाए सिंध के अंदर 5 आप आके जुड़ते हैं तो वो रचता है, उसकी भूख पूरी होती है. तो हमने जब से इंडिया से फिल्में बंद कर दी हैं तो हमारे सिनेमास की भूख, हमारी ऑडियंस की भूख जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट नहीं केटर कर पा रहा. एवेंजर्स आ जाती है, मार्वल की मूवीज आ जाती हैं, बट दे कीप द शो गोइंग, बट दे डोंट रियली क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर स्टेप इन करे और क्या मैंने भी सिनेमा बनाना है, मैंने भी मूवी प्रोड्यूस करनी है. In that light, I think Maula Jat is something we're all relying on to carry. And actually, it's the first film I'd say outside of Wase जो फिल्में लिखते हैं, जिनमें perform करते हैं, वो भी export हम करते हैं. But Maula Jat हम export quality film बना रहे हैं जो LA में चल रही है, London में चल रही है, Norway में चल रही है, and it's really the numbers that are coming. I think that's the brightest light of when it comes to the numbers. Of course,
Joyland and the paths that film is breaking for Pakistani content producers is, unparalleled in our history. So, Assalamu alaikum everyone. I hope you can hear me. फिल्मों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं ड्रामों के बारे में बात करूँगी, if that's okay with you. So, मुझे लगता है कि अभी भी हमारे स्क्रीन्स पर कुछ क्लीशेज हैं जो चल रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स कहते हैं, feel free to correct me if I'm wrong, कि आवाम देखना चाहती है. एक वो क्लीशे कह लें या एक पैराडाइम कह लें या एक तस्वीर कह लें, वो है एक मजलूम औरत की. अभी भी हमारी स्क्रीन्स पर औरतों को मजलूम दिखाया जाता है. मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो रहा है. अगर आप हम टीवी खोल कर देखें तो उस पर थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स पाई जाती हैं. हदीका कयानी ने अभी एक ड्रामा किया है which she falls in love with a man, Bilal Abbas, who's much younger than her. Did any of you watch that on MTV? Dobara? Yeah. So I think scripts like that are the need of the hour. I think we are doing really well at comedy. So Usman Ji is a brilliant comedian. You'll hear from her even when she speaks. She's really, really funny. We did Chupke Chupke together a few years ago and everybody really enjoyed that. So मेरी जो उम्मीद होगी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए वो ये होगी कि लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट्स की तरफ आए because people really enjoy that, people respond to that. और जो दूसरी मेरी उम्मीद होगी जो मैं प्रोड्यूसर्स से खुद जाके कहती हूँ और उनको शायद अच्छा नहीं लगता, वो ये है कि आप हमें हमेशा पुशबैक करके कहते हैं कि आप ऑडियंस को ग्रिल्ड सैंडविच खिलाना चाहते हैं लेकिन ऑडियंस सालन खाना चाहती है, which is basically a way of saying that you want to show them sophisticated scripts but the audience really is used to something less sophisticated. But I don't agree with that. I think if you show them good stuff like Maula Judd, like the kind of scripts Vasya writes, they're waiting for it. लोग तरसे हैं अच्छी स्क्रिप्ट्स के लिए. और जब मैं प्रोडक्शन हाउसेस में मीटिंग्स करती हूँ behind closed doors with content heads, जो औरतें हैं वो खुद कहती हैं कि हम बड़ी मेहनत करके बड़ी लड़ाई करके मीरा जी एक ये प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट लिखी है, बस दुआ करें अप्रूवल मिल जाए. जब मैं माहिरा से बातें करती हूँ, जब मैं सजल से बातें करती हूँ जिसके साथ मैं अभी एक ड्रामा कर रही हूँ, सब कहती हैं that they want to show empowered women, not for the sake of showing empowered women, but अगर आप दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये possible भी है. तो इस पर बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, but I'm very curious to hear what my colleagues have to say on this. I agree with you 100%, and I would add to that. मैं तो going forward, I would like to see कि हमारी जो इंडस्ट्री में ये जो अम्मी अब्बू सिंड्रोम है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको सिवाय अम्मी अब्बू के और कुछ मतलब उनको उठा के अम्मी अब्बू बना देते हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. लाइक उनको they can do झकास kind of roles. फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड मूवीज आपने देखी होगी, उसमें जूडी डेंच जो है वो जेम्स बॉन्ड की भूमि तो नहीं बनी हुई होती ना, वो वो काइंड ऑफ शी इज एन सीक्रेट सर्विस की ऑफिसर है. तो आई मीन हर ड्रामे में हर मूवी में 40-45 आपने क्रॉस किया, बस आप अम्मी हैं जी, आप अबू हैं, आप मम्मी हैं, आप पापा हैं. I mean, I think we can look beyond that and move on to why can't older people be the leads? You know, it depends on the role. अगर रोल धांसू किस्म का है फिर भी, और हीरो हीरोइन का अगर जरा छोटा रोल है, बड़ों का धांसू रोल है, तो उसमें वो क्यों नहीं लीड्स हो सकते क्योंकि वो 70 साल के हैं. That I find a little, I find it very weird. I don't think कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि लोगों को लीड ना कहा जाए क्योंकि वो 70 साल के हैं. मॉर्गन फ्रीमन अगर कोई फिल्म कर रहा है तो लीड वो ही कर रहा है, नो मैटर चाहे वो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट वो लीड है. तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? I would like to see that. I mean, why can't I play a spy? In fact, I would love to see. I would love to play a spy. It would be amazing. But no, it's not the case, and it's sad कि हम लोग ऐसा होता है. I would, going forward, I wish we could change that. कि ये चीज़ हम चेंज कर सके अपने सिनेमाज. मतलब आई डोंट नो, फिल्मों का तो इतना नहीं, मैं तो ज़्यादातर ड्रामाओं से रिलेटेड हूँ, तो ड्रामाज में तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी दिस चेंज हैपन, कि थोड़ा सा हम एजिस्ट कम हो जाए. बल्कि मैंने अभी एक ड्रामा किया था, आई वोंट टेक एनी नेम्स, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम ही नहीं था.
उर्दू में मोम लिखा था, तो हम सारे कास्ट मेंबर्स मुझे मोम कहते थे, मोम दैट वाज माय आइडेंटिटी, मोम, क्योंकि मैं हीरो की मोम थी तो मैं मोम थी। सो एंड आई वाज लाइक मेरे कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है। सो इट वाज बाद में जाके आया कोई नाम, you know, so yeah, that's why I don't know if you agree with me. आई थिंक पहले तो उस्मा जी आपने कहा कि आप स्पाई बनना चाहती हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बात पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन दूसरा मुझे लगता है कि एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। जिन जो फिल्मों का आपने जिक्र किया, वेस्ट का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है वहाँ पर बहुत इवॉल्व की है इंडस्ट्री, एंड इवॉल्व कल्चरली भी की है बहुत ज़्यादा। कल्चरली का मतलब होता है कि बहुत से लोग अभी यहाँ पे हम एक यूनिवर्सिटी ने इसका इवेंट का इनेकाद किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप मोस्ट बच्चों से पूछें तो आज से अब जाके आपको शायद कुछ बच्चे मिलें जो कहें कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है। आज से 10-15 साल पहले ये बिल्कुल नहीं था, वो तब इंजीनियर्स, बैंकर्स और डॉक्टर्स ही होते थे। तो आई थिंक ये एवोल्यूशन के साथ साथ होगा। पहले तो एक्सेप्टेंस आएगी फील्ड की, उसके बाद फिर उस फील्ड की बहुत सी शाखाएं हैं जिसमें डायरेक्टर है, एक्टर, राइटर, कैमरामैन, फिर बच्चे उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पिछले सिंस 70 से लेके 2000 अर्ली तक बहुत कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं रही ये फील्ड, जिसकी वजह से हमारे कहीं बैक ऑफ द हेड है, ये प्रेफर्ड चीज़ों में से नहीं है। उसकी आपको सबसे बड़ा सबूत इस बात का जो ये एक जैसे आप कह रहे हैं साइलेंट कल्चरल एक एलिमेंट होता है, ये किस तरह मिलता है कि आप हिसाब लगा लीजिए कि आज ये सेशन जो है इस पूरे प्रोग्राम का आखिरी सेशन है, यानी कि सबसे आखिर में एंटरटेनमेंट का ख्याल आया। उससे पहले आप 2 दिन से माहौलियाती आलूदगी, पाकिस्तान 100 साल में कैसा होगा, ये सब कुछ आपने सुना, लेकिन उसमें कहीं एंटरटेनमेंट का जिक्र नहीं था। तो आपके सामने है ये सबूत कि एंटरटेनमेंट और कल्चर जो है हम सबके जहनों में सबसे आखिरी खाने में पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बाहर की दुनिया में इसको बहुत आगे रखा जाता है, बाहर की दुनिया से मेरी मुराद कहीं भी पाकिस्तान से बाहर है, तो वो लोग समझ चुके हुए हैं। हम थोड़े समझने में टाइम लगता है, उम्मीद है कि हम समझ जाएंगे और तब इवॉल्व होकर हमें ये चीज़ें मिलेंगी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो नई जनरेशन के लोग अब जाके एक्सेप्ट करके इस फील्ड में आना शुरू हुए हैं, उससे पहले तो आने नहीं चाहते थे या उनके घर वाले नहीं चाहते थे। सो आई थिंक एवोल्यूशन के बाद ये सब चीज़ें इंशाल्लाह निकलेंगी। नहीं तो इवॉल्व सारे हो गए, माँ बाप ही नहीं इवॉल्व हो रहे। नहीं, आपका तो मसला ही बिल्कुल भी आप जा रहे हैं, सारे इवॉल्व हो गए, माँ बाप नहीं भी खड़े। स्पेसिफिकली उस राइटर का मसला है जिसने नाम नहीं लिखा था माँ का, मगर इन लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जर पिक्चर मुझे लगता है कि ये एक बड़ा नहीं, मुझे अगर मैं कोई मॉडर्न माँ प्ले कर रही हूँ तो उसमें मुझे कहा जाता है माँ तो लगे भाई, हेलो मैं माँ हूँ, मैं रियल लाइफ में भी माँ हूँ, तो मैं माँ नहीं लग रही, मतलब वैसी माँ नहीं लग रही है जैसे उस राइटर ने सोची होंगी। नहीं, आप उसकी अम्मी जैसी लग रही हैं। नहीं तो एक मॉडर्न माँ है तो उसमें माँ नहीं लग रही। नहीं, उनकी नहीं हम एज अ नेशन बहुत इवॉल्व कर गए हैं। अगर आप मॉडर्न लोगों में भी देखें तो उनकी माएँ जरा फर्क दिखती हैं, तो अगर हम ड्रामों में दिखा देंगे कि वो फर्क दिखती है तो कौन सी क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा ना, ये चीज़ें इवॉल्व होंगी आहिस्ता आहिस्ता। 2022 हो गया वैसे, आपको इस पे हमारा 2022 हो चुका है, हमारा इतनी और चीज़ों में 2022 हो चुका हुआ वहाँ पे भी हुआ। अभी तो ये बहुत छोटा सा मामला है, हम तो बहुत सी और चीज़ों में पीछे बैठे हुए हैं। फिर आप क्या प्रोजेक्ट नहीं, यही मुझे लगता है कब तक इवॉल्व हो जाएंगे? आई होप कि हम जल्दी करें और इवेंचुअली विद टाइम होंगे हम। आई थिंक एज न्यू पीपल वुड कम इन वी वुड। बिल्कुल, एंड आई आल्सो थिंक कि अगर आप किसी को देखिए, आजकल बड़ा कूल है टू से रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट? एवरीबॉडी इज सेइंग इट इन द वेस्ट, बट इट एक्चुअली डज। सो इफ यू पुट मोर वुमेन इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, तो वो कहेंगी कि इशरा सुल्ताना सदीकी हैं, हम टीवी पर आप स्लैप नहीं दिखा सकते, आप चपेट नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि सुल्ताना आपा जो हम टीवी की प्रेसिडेंट है वो खुद एक औरत है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक व्हेन आई एम व्हेन समबडी कॉल्स मी फॉर अ रोल, बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं नहीं करती, मतलब जो मेरे लिए एक रेड लाइन है, तो मैं कहती हूँ, फिर पुशबैक मिलता है कि एक अभी रिसेंटली मुझे एक डायरेक्टर ने एक रोल ऑफर किया और मुझे मसला था, एक एथिकल एक इशू था, तो मैंने कहा मैं नहीं ये कर सकती। तो उन्होंने कहा मीरा जी, जो बंदा निहारी बेच रहा होता है वो ये तो नहीं कहता ना कि मेरी निहारी ले लो, इसमें कोलेस्ट्रॉल है।
तो आप करेंगे, आप ये ना कहें कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है, बट आई डोंट थिंक लाइक दैट. सो मैं उधर फंस जाती हूँ, बट देयर आर अदर पीपल हु डू इट. सो that's life. Yeah. नहीं तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट. जब Yeah. फोन आता है कि जी क्या रोल है, वो माँ का रोल है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि नहीं But I मुझे think as someone जो देखता है एंटरटेनमेंट में, हमेशा ये सवाल होता है फिर जो चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पर है. आप लोग कहते हैं फेसलेस एग्जीक्यूटिव्स who are making decisions, फिर consumers is one जो शेयर होगा, आप लोग as producers and actors, लेकिन फिर at the end of the day कौन है वो actor who can change, actor in the broader sense, not like professional actor, but like who are the people जो ये change ला सकते हैं? Because if we keep pointing out at different I think एक perspective मेरा इस चीज़ के ऊपर ये है कि एक theorist, I forget the name, Mira probably is better read than I am, she will correct me afterwards, but कि philosophy का एक जुमला था, the medium is the message, and so we're talking about content के TV ड्रामे के अंदर content क्या है, वो एक debatable चीज़ है, what it should be like. I think ये मसला जिसका आपने सवाल पूछा है, इसकी शायद बुनियाद ये है कि ये हमारा वसीला इस पूरी एंटरटेनमेंट का टेलीविजन है. So the medium itself is the message. What do I mean by that? When you're showing something on the television, that means आपके पास 7 बजे से 8 बजे का स्लॉट है. घर पे एक ही टीवी है, उस एक टीवी के ऊपर बैठ के खाने से पहले दादी ने भी बैठना है, पोते ने भी बैठना है, पोती ने भी बैठना है, सारों ने उस 1 घंटे के अंदर कंटेंट कंज्यूम करना है. Now the person who's making the decision for that role has to be very careful. And I think that's unfortunate. इसके अंदर mediums change हुए हैं, social media, Netflix, streaming platforms, जिन्होंने breakup कर दिया कि बेटा शायद कमरे में जाके अपने लैपटॉप पे देख रहा है, बेटी अपने कमरे में देख रही है, and that allows for some experimentation where I can make content just for the 20 year. But if you tell me कि मैंने टीवी के ऊपर कोई चीज़ चलानी है, तो मैं cautious होता हूँ. लोगों ने पैसे लगाए हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, हर तरफ से हक की कमाई है लोगों की लगी. और उस सिनेरियो के अंदर आई थिंक द रूम्स दैट मीरा इज टॉकिंग अबाउट, द रूम्स दैट यू विल अनॉयड बाय, द पर्सन इन दैट रूम इज सेइंग यार मैंने 7 से 8 बजे में एक ही चीज़ में लगा सकता हूँ और उस एक चीज़ को पूरी फैमिली में एंजॉय करना. तो लेट्स बी एज सेफ एज पॉसिबल, एंड दैट आई थिंक व्हाट. नहीं कामिल, मैं ये नहीं कह रही कि आप माँ बाप के कैमरे करवा दें. मैं तो ये कह रही हूँ कि और भी रोल्स हो सकते हैं, और आई अंडरस्टैंड कि हमारा एक कल्चर है और हमारा फैमिली सारी फैमिली बैठ के देखती है, एंड आई एम ऑल फॉर इट. ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है पाकिस्तान के बारे में कि आप सब लोग बैठ के देख सकते हैं. अभी कल ही इनफैक्ट मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही थी, तो एकदम से मेरा भाई आ गया, तो मैंने कहा बंद कर दो तो अब वो एकदम से शर्मिंदा सी हो गई. सो आई अंडरस्टैंड दैट, ये बड़ी अच्छी बात है. लेकिन हम कब तक ये फैमिली ड्रामा पहले तो इट यूज्ड टू वर्क वेरी वेल कि वो जो होते थे हसीना मोइन के स्क्रिप्ट वगैरह, दे वर अमेजिंग, और वो बड़े चले और बड़े वो नेचुरल और बड़े फैमिली ओरिएंटेड थे. बहुत ज़िंदगी दुनिया बहुत आगे निकल गई है. सो अब उसमें ये है कि चलो हम फैमिली ड्रामा तो कर रहे हैं, बट अब हमारी पेस भी अब आगे चल जाती है. Where are the detective series? I'm with you. Yeah, But just where understanding. are the crime series? Where are the detective series? We want to watch some of that, we can have some entertainment industry है, तो हमें चलो वो जो shows होते हैं जैसे live shows वगैरह तो होते ही हैं, but there's so many things that we can do that I feel there is room for. I think Uzma ji, I think I totally agree with you, and I think all three of us agree with you. I think what Vasir was basically saying was that you need institutional support. Institutional support is built over decades. It also, you need a culture that supports the arts, right? So either we have very fixed identities here in our country about who we are and who we want to be, and it's good to have a conversation about that. But the larger superstructure around culture, around who we are, around where we're going and what we want to be, I think those are the larger questions कि हम हैं कौन और हम क्या बनना चाहते हैं. उससे भी I think that's another conversation we should be having. I think because underpinning that is the drama serial, the film, the ads we make, and so on.
यू नो अगर हम जैसे हमारे ड्रामास जो हैं उसमें हम नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग कि दिस कैरेक्टर इज लाइक दिस, बस दैट्स इट, ये कैरेक्टर ऐसे ही रहेगा। हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। हर एक मैं माँ बाप को ही लेके बैठ जाती हूँ कि माएँ आप कितनी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं आज। अब वो ज़माना गया कि एक ही टाइप की माँ होती है, वो फ़र्क हो गई हैं सारी। तो हम स्टीरियोटाइप्स क्यों क्रिएट करें, हम उसको क्यों नहीं ब्रेक कर रहे? सो आई डोंट नो, आई फील very strongly about this. Since I'm directly affected by it. Near you mentioned institutions and what institutional change, and अब दिमाग में question आता है, so I'm sorry I'm throwing this out there. अब in the past few years हमने देखा है कि कोई ना कोई content जो हमारा निकलता है, ड्रामास और फिल्म्स में, उदाहरण पे पैमरा ने कह दिया, जिंदगी तमाशा बैन हो गई, there's so many different things that have been controlled कि ये नहीं आप कह सकते. So we talk about the trajectory of Pakistani entertainment. जैसे वासनी ने कहा कि एक evolution है, लेकिन अभी it looks like जो वो stereotype breaking content, the things that are challenging things, वो allowed ही नहीं हो रही. They looked at a very negative, they look very negative. So is there a way around it, or do we have to sort of wait for an evolution to happen in the entertainment industry or generally in society? आई थिंक देयर इज अ वे अराउंड इट, और हो रहा है। देखिए कुछ तो कंटेंट ऐसा है जो कि आप नहीं चला सकते टीवी पे। अगर आप मुझे ये कहें, मैं एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत से बैठे हुए हैं कि लोगों को बहुत इनको इल्म होता है। अब आप मुझे कहें कि मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर चला दूँ पाकिस्तानी चैनल पे, तो मैं नहीं चला सकता भाई, ठीक है। तो एंड आई डोंट एग्री विद दैट इवन कि वो नहीं, क्योंकि हमारा बिल्कुल एक और है यहाँ पे आपका, जिस तरह इन्होंने कहा कि पूरी फैमिली बैठ कर देखती है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिया के अंदर भी यही है बाय द वे, आप उनके जो मेन स्ट्रीम चैनल्स वगैरह सोनी, स्टार प्लस, कलर्स देख लें, एक बहुत ही टिपिकल ड्रामा चल रहा है उनका। तो वो जो कुछ एजी कंटेंट जिसे आप कहते हैं वो मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे नहीं है, और ये वेस्ट में किसी हद तक हॉलीवुड में, अमेरिका में भी है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी चीज़ पे कि क्या आपने नाम लिया ज़िंदगी तमाशा का, उसका टेलीविजन से नहीं था, वो एक और बिल्कुल इशू था, और वो भी आई थिंक अब सॉल्व हो रहा है। आई थिंक मे बी इन मंथ और सो हम शायद देख लें वो सिनेमा के लिए, तो मौका आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। अब तो आप, मुझे लगता है इनके पास इतना ज़बरदस्त ये जो डिजिटल यूट्यूब की साइड से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका हुआ है, कुछ भी करके डाल देते हैं, बल्कि कुछ बहुत हैवतनाक किस्म की चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि नहीं डालनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है वो चीज़। हाँ ऑफकोर्स कुछ जगहों के कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप टेलीविजन पे अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे कैमरा आता है और आपको वहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको नाम लिया टॉपिक है, वो आप नहीं कर सकते भाई, उसके अलावा कोई और बात कर लें क्योंकि फैमिली ऑडियंस है यहाँ पे। बाकी हर जगह कुछ और है, आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग करते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि वो चला रहे हैं, तो कोई नहीं उनको रोकने वाला, वो कर रहे हैं। गुड और बैड, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। सही, that I think does answer that question too quite a bit. I think अब आपने जो बात कही about digital platforms, अब हमारे be it Netflix या YouTube इस तरह की चीज़ें, content बहुत बन रहा है हमारे में, everyone has a phone, everyone is able to create things. इसके positive negatives तो हैं obviously, लेकिन how do you see it, if at all, affecting हमारी entertainment industry? You see it? Sorry, I did not hear you. Oh, sorry. Okay, so यही पूछा था कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं या एप्स की या वेबसाइट्स की, ऑल दीस थिंग्स, उसके प्लस एंड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीज़ हैं ऑफ कंटेंट बीइंग क्रिएटेड बाय एवरीडे पीपल और जस्ट हैविंग एक्सेस टू मोर कंटेंट, बी इट थ्रू नेटफ्लिक्स और यूट्यूब एंड थिंग्स लाइक दैट। आपके हिसाब से does it have an effect on the entertainment industry, and what kind of effect do you think it has? Is it overall positive or is it overall negative? If we can even back it in that way. आई थिंक एक चीज़ तो डेफिनेटली इस फोन में की है, वो है कि डेमोक्रेटाइज है। सो जो सेफ गार्ड्स हैं, आपने भी बात की पैमरा की, अब आप खैर पाकिस्तान में वी आर वेरी इंजीनियस इन ट्राइंग टू फाइंड वेज ऑफ मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, बट इट्स हार्डर एंड हार्डर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट दैट यू मेकिंग। मुझे याद है मैंने स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ एक समर्स के ऊपर हमने बहुत ही गंदी फिल्म बनाई अपने, एक हमारे पास वो डैड फिल्म कहते हैं कि आप उसको लेके हमने, और वो शुक्र है अब कहीं भी नहीं पाई जा सकती,
बट आज हम वो बना रहे थे तो इट वुड हैव बीन सो इजी टू पुट दैट अप एंड हु नोज मे बी इट गेन्स ट्रैक्शन। यूट्यूब के ऊपर कुछ सीरीज आई हैं जो कि मिडसमर केओस की मे बी आपके ऑडियंस के स्टूडेंट्स ने देखी हो, बहुत लोग उसको क्रिंज वॉच समझ के कह रहे थे, पर एक सीरीज है इस्लामाबाद के बच्चों ने बनाई and it was getting 200,000 views every week, which you have to respect success whether you like the content or not. So in that way it's democratized and uska barrier to entry बहुत lower रहती है, and I think that's definitely a good thing considering हम यहाँ पे barriers to entry बहुत हम हर अलहमरा के बाद भी बारे में लोगों के लाइफ टाइम से अगर हम देखते हैं हर जगह के बैरियर टू एंट्री इतने बढ़ गए हैं कि the digital platform allows people to enter, and especially young people who just have the ability to film, create a story, find it around them, learn, and also put it out to the world for someone to see. I totally agree with you. And मुझे अक्सर होता है कि जब मैं कंप्लेन करती हूँ तो मुझे कहते हैं आप लिखते हैं, फिर मैं कहती हूँ मेरी उर्दू में रवानी नहीं है, तो कहते हैं अंग्रेज़ी में लिखते हैं, ट्रांसलेट करवा देंगे। तो अब मैं उस मोड पर पहुँच गई हूँ जब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्क्रीन प्ले का कोर्स करके खुद कुछ लिख दूँगी। तो वो और and my vision for that is a digital platform. It's not television. Certainly not television in Pakistan because I know what that screen looks like and I can't make content for that. मैं अगर बनाऊँगी तो थोड़ा हटके होगा, शायद थोड़ा बोल्ड होगा। तो मैं प्लीज उस्मा को उस्मा जी अभी से आके लिफ्ट इंस्पायर अगर तुमने मुझे मोह बनाया ना तो मैं चलूंगी। So I think that yeah, go on. No, I was just going to say the same thing. I totally agree with you. ये प्लेटफॉर्म्स बड़े अच्छे हैं और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे उनमें बड़ा टैलेंट होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते किसी फॉर सम रीजन और द अदर। आजकल तो एवरीबडी कैन क्रिएट देयर ओन गेम और ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह है कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं ये दे आर वेरी गुड फॉर अस बिकॉज वी कैन टू पुल आवर गेम अप होपफुली क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं तो अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि इट काइंड ऑफ और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो हमेशा से बड़ी अमेजिंग है। आई यूज्ड टू मैं रेडियो शो करती होती थी सिडनी में मॉर्निंग शो, तो उसमें मुझे मेरी हम जहाँ भी जाते हैं जिस कंट्री में भी जाते हैं ज़्यादातर लिसनर्स वगैरह देसी जो होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का वो है रेशो। तो वो लोग सारे फ़ोन कर करके ना कॉल कर करके कहते थे आपके ड्रामे, आप लोगों के ड्रामे, आपके ड्रामे। अच्छा मैं उसको देख भी नहीं रही थी और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप अपने ड्रामे तो देखें और वाकई जब मैंने देखे तो मैं तो मूवी हो गई। आई मूव्ड कॉन्टिनेंट्स। आई रियलाइज्ड कि कितना क्वालिटी का काम हो रहा है हमारे मुल्क में माशाल्लाह। तो हम उसको अगर बजाय से कि हम कह नहीं लोग ये मांग रहे हैं ये हम अस्यूम कर रहे हैं कि चपेट पड़ेगी तो ओह बड़ी रेटिंग्स आ जाएगी। ये सब हमें ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। वी शुड एम वेरी हाई। और कुछ ड्रामे हैं अभी देखिए सोशल मैसेजेस और ये अभी एक ड्रामा चल रहा है उसमें इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया है कि ये जो सोशल मीडिया के हैजर्ड्स क्या हैं और उसके रेपरकशंस क्या होते हैं। तो इतनी खूबसूरती से आप इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस दे सकते हैं लोगों को एंड वो हम कुछ ड्रामों में दे रहे हैं बट कुछ में नहीं भी दे रहे। I don't want to move past सास बहू completely. मुझे लगता है एक आयरनी ये भी है कि जो ड्रामे जैसे भी बनते हैं उनकी रेटिंग आती हैं और वो आप ही लोग देखते हैं तो अब इंसान जिम्मेदार किसको ठहराए? वो जो बनवा रहे हैं वो तो एक साइंटिफिक डेटा लेके उसके मुताबिक ड्राइव कर रहे हैं ना। जिस तरह आप अपने अपने कोई जो भी काम करते हैं उसके अंदर भी बहुत सी एक साइंस होती है कि फ़लाँ चीज़ बिकती है फ़लाँ चीज़ नहीं बिकती है, हमारी इस चीज़ की सेल ज़्यादा हुई इस चीज़ की नहीं हुई। यही चीज़ सिमिलरली वो लोग भी कर रहे हैं और वो तो अब या तो आप लोग देखना बंद कर दें वो तो नहीं कर रहे आप, तो फिर अब वो जो बनाए जा रहे हैं तो ये वही बात है कि आपने दिन को कहाँ से पकड़ना है या पहले अंडा आया है मुर्गी। इट्स वन ऑफ दोस डिबेट्स। मगर मुझे लगता है कि देखिए जो भी हो रहा है उसके दरम्यान में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का कायम रहना whether it's टेलीविज़न और सिनेमा और कोई भी वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है कि वो प्लेटफॉर्म रहना चाहिए क्योंकि जब तक वो आपके पास भागने का प्लेटफॉर्म होगा ना मैजिक उसी में से निकलेगा और वो एक दिन निकलेगा। कोई एक दिमाग होगा, कोई एक जहन होगा,
किसी राइटर का, किसी डायरेक्टर का, जो कि आपके तारें जुड़ेंगी एंड दे विल गो थ्रू द रूफ। आप अभी शुरू में आपने जिक्र किया था मौला जट का, अभी वो लगी हुई और डूइंग फिनोमिनल बिजनेस। Now just imagine that if, well, they wouldn't have actually made it in the first place, मगर अगर ये तमाम सिनेमाज जिसमें मौला जट लगी है ये ना होती, क्योंकि किसी ने वो पहली फिल्म ही नहीं बनाई थी 2011 में, तो ये है वो एवोल्यूशन कि कोई ना कोई करता रहा और एक जगह मौजूद थी, वहाँ पर एक 3-4 लोगों की टाइमिंग मैच हुई और वो लैंड हुए। अब आप उसके अंदर से जीनियस ढूंढ रहे हैं, कमाल ढूंढ रहे हैं, कमाल ये हो गया, but the platform needs to be there. Without the platform, they wouldn't have any Mola Jat or anyone. I agree. And just going back to your original question about social media, I do feel like we live in an age of hyper information, right? Everywhere you turn, there's information, mostly on our phones, on our TV screens. और जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ तो हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, वो रेड फॉन्ट में लिखा आता है और हमेशा वॉल्यूम नीचे करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अगर इस तरह करके कोई काटे तो महसूस नहीं होता, जब तक बिच्छू नहीं काटता आपको तब तक चौंक के आप नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो न्यूज़ मीडिया है उसने इतना हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, एवरीथिंग इज एट अ पिच बिकॉज देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन फॉर इन्फॉर्मेशन. Right? We have a proliferation of TV channels now. We have so many YouTube channels that everybody is vying for your attention. And your attention is essentially currency because that's how ads are made and that's how ads are built and that's how money is made. So attention is basically money. That is also something that we need to think about. And so everything is now multiplied times 10 in order to get your attention, in order to get our attention. So शायद इसीलिए जब तक वायलेंस नहीं दिखाई जाती स्क्रीन पे मज़ा नहीं आता बिकॉज हमें आदत हो गई है. That's actually something that I think about a lot. तो हम यही बात करते पहले कि ड्रामास काफ़ी हमारे इंडस्ट्री के फाउंडेशन रहे हैं for quite a while. They are the things that got views and attention. अब यही है कि कुछ साल से भी स्टार्ट मेकिंग मूवीज, मतलब 2010s के बाद से स्टार्ट. Now this might be a silly question. I'm sorry if it is. लेकिन what was it about, or what is it about our dramas that made them so memorable or iconic, and what can the movie part of the entertainment industry learn from that? Sorry, I didn't get the second part of the question. I didn't understand. हाँ, so एक तो part है कि what made our drama so special, सही है, क्या था, was it the writing, was it the directing, what was it about it? And then दूसरी कि अभी जो हम फिल्म्स बना रहे हैं, although I understand films movies different, लेकिन क्या था वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ड्रामास दैट कुड maybe be applied जब हम मूवीज बना रहे हैं, या इज इट समथिंग दैट वी शुड कीप इन टाइम? देखिए, एक तो बेसिक चीज़ है, आपका टेलीविजन ड्रामा डिसकंटिन्यू नहीं हुआ सिंस इट्स इंसेप्शन इन द 60s BTV डेज से। आपका टेलीविजन ड्रामा आज 2022 तक कंटिन्यूसली चल रहा है। फिल्म्स गॉट डिसकंटिन्यूड इन द अर्ली 2000 से लेके 2011 तक। सो दैट इज बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आपका जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ चलती जा रही है रवानी से पिछले 50-60 साल से, और एक चीज़ के बीच में डिस्ट्रप्शन हुई है और ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गई थी, तो वो उसको तो दोबारा रिवाइव किया। तो इसलिए आपको वो लग रहा है अब इसका अगर ये चलती रहती है तो आई गेस आपको कुछ अर्से बाद आपको ऑलरेडी, अगर आपको अभी एक फिल्म पसंद आ रही है, सो द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी शोइंग। सो आई थिंक सबसे बड़ी वजह तो वही है कि अच्छा, ये सिर्फ बनाने वालों की तरफ से नहीं होती, देखने वालों की तरफ से भी होती है, क्योंकि देखने वाले जो हैं वो पिछले 50-60 साल से पाकिस्तानी ड्रामा कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। एक फीचर है उनके लाइफस्टाइल का, रोज़ रात को ड्रामा चलना है। पहले BTV में चलता था और प्राइवेट चैनल्स पर चलता है, मगर चल रहा है। आपकी दादी भी देख रही थी जब वो जवान थी, आपकी वालदा ने भी देखा, आपने भी देखा, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, तो ये एक कॉन्स्टेंट फीचर है। सिनेमा में वो, बिकॉज सिनेमा बीच में बंद हो गया तो वो फीचर एक तरह से स्किप हो गया आपकी एवरीडे लाइफ साइकिल में से। मुझे लगता है फॉर मी, हमारे ड्रामास की जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ आवर ड्रामास लाइज इन हाउ रियलिस्टिकली वी ऑलवेज पोर्ट्रेट देम. यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स जब हम अनकही वगैरह ये चलते होते थे, वो इतने रियलिस्टिक थे और वो आपकी एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रे करते थे. नाउ दिस इज हाउ वी स्टार्टेड एंड वी वर इवॉल्विंग, एंड that was that
you know, that being so close to reality was, I feel, very kind of contributed to the success of our dramas. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि मेरे एक दफ़ा जब मैंने शुरू में मैंने यहाँ काम करना शुरू किया काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने मुझे ना स्क्रिप्ट बताया और उन्होंने कहा कि ये एक गरीब बेवा औरत का रोल है और वो इतनी गरीब है। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा मैं सीधी ऑस्ट्रेलिया से कचरा कुंडी में पहुंच गई, ठीक है। इट वॉज वेरी वेरी कन्फ्रंटिंग। और वहाँ पे ये था कि आई वाज शूटिंग इन दैट एरिया टू पोर्ट्रे हाउ यू नो कि रियलिस्टिक होने की इंतहा देखें आप, कि वहीं पे शूट कर रहे थे, वही हालात दिखा रहे थे। और जब मैंने स्क्रिप्ट देखा तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा हर एक औरत को इतने मसले मसाइल कैसे हो सकते हैं, ये तो दिस इज नॉट रियलिस्टिक। और जब मैं वहाँ बैठी, आई वांटेड टू यू नो, जो जिनका घर था, मैं उनके बिहेवियर को अपने कैरेक्टर में इम्बाइब करने के लिए आई वाज बॉन्डिंग विद दैट लेडी। मैं उनसे बात कर रही थी तो वो अंकल को यू नो, आंटी को ब्लड कैंसर था, अंकल को एपिलेप्सी थी, कमाने वाला कोई नहीं था, यू नो, उनका एक बेटा बेचारा पढ़ रहा था, बेटी को इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसकी शादी में। एंड आई रियलाइज कि यार नहीं, ये दिस इज रियलिटी, ये एग्जैजरेटेड नहीं है, ऐसा होता है। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है हमारे ड्रामों के बारे में कि रियलिटी बड़ी अच्छी पोर्ट्रे करते हैं हम। बट देन कमिंग बैक टू माय इनिशियल वर्क, कि अब हम इवॉल्व भी कर गए हैं, हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, यू नो, और हम गए हैं। मैं तो agreeing with both of you, and बासिम ने कहा कि 70 years of consistent television and truncated portions of film, you know, take out the 70s, 80s, and then 2000s के अंदर टेररिज्म आ गया, सिनेमा घर बंद हो गया, एक बड़ी स्टोरी हिस्ट्री है। और उसका एक दूसरा पहलू जो बेस्ड ऑन व्हाट ही सेड मुझे दिमाग आ रहा है कि उस वजह से कंपटीशन भी डेवलप, टीवी के अंदर, ड्रामों के अंदर एक चैनल दूसरे चैनल से कम्पीट कर रहा है, एक राइटर दूसरे राइटर से कम्पीट कर रहा है, हर एक्टर, सो सडनली यू इन दैट सॉर्ट ऑफ कम्पिटिटिव स्पिरिट यू पुश फॉरवर्ड। यहाँ पे द गुड फिल्म्स दैट हैव कम अबाउट haven't come about because they're competing with other films here. They've been made by people who are trying to compete with content from India, trying to compete with content from abroad, and it's very tough to find that and kind of find the engine for it without a lot. You know, I'll go back to my earlier point that for Pakistani films to truly flourish, we'll have to open the border with India when it comes to content. We have to. Aamir Khan needs to play here for all of us to go watch his film, for me to say, yeah, I'm competing with Aamir Khan now next week. And I think that was what was happening, which got us from 2011 to 2018. और मतलब कि जिस तरह हर कोई सिनेमा घर खोलना चाह रहा था, बिकॉज इट इज बूमिंग बिजनेस, बिकॉज हर हफ्ते अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, मतलब कि हर हफ्ते किसी न किसी की मूवी आती थी और 5वें हफ्ते में हमें कितनी डालते थे, and it created that space. So right now it is a bleak environment. वाला जट आई है, वो चलेगी, इंशाल्लाह बहुत देर चलेगी, but नहीं, इतना देर नहीं चलना चाहिए, किसी और को आना चाहिए. But you know, there's no other film on the horizon, and you need to open that up. And just to finish off this thought, I also think आपने पूछा था कि वो key ingredient क्या था. Maybe because I'm also a writer, I think स्क्रीन राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। सीना मोइन के आप ड्रामे देखिए, अनवर मकसूद साहब जिस किस्म की राइटिंग करते थे, देयर वाज अ लाइटनेस टू आवर स्क्रिप्ट्स, एक तंज था, एक प्लेफुलनेस थी। और मुझे लगता है दैट इट्स sort of symbiotic relationship with culture as well. ये मैं शुरू में जो बात कर रही थी, you know, we were 40 years, 50 years after partition, हमारे ड्रामे बन रहे थे, निज़ाम भी मुख्तलिफ था। I think heaviness एक आई है हमारे माशरे में, it's okay to acknowledge that. दुनिया भी बदली है, 9/11 हो गया, हमारी अपनी इधर दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई 2000s में। मुझे याद है जब सिनेमाज को बर्न किया जाता था, 2008 में मैं शूट पर नहीं जा सकी पूरा हफ्ता, बिकॉज सिनेमाज को आग लगा दी थी कराची में। तो जब ये चीज़ें माशरे में होती हैं तो आपकी फिर टीवी स्क्रीन्स पर भी रिफ्लेक्ट ये चीज़ें होंगी। महंगाई इतनी हो गई है, हर किस्म का बहरान है इस मुल्क में, तो ऑब्वियसली यू कांट deny all of those things, right? Either your scripts will reflect that or they'll
और सोसाइटी विल रिफ्लेक्ट इट बैक. इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इंतज़ार हुसैन साहब ने एक दफ़ा एक बात की थी जो मैं कभी नहीं भूली. उन्होंने कहा कि he passed away a few years ago, but he said in a kind of private gathering, he said जब से पार्टीशन हुई है, जब से तकसीम हुई है, मैंने पाकिस्तान में दो चीज़ें देखी हैं. एक मैंने देखा है कि मजहबी तबका बहुत आगे आया है, और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि औरत ज़ात का तबका बहुत आगे आया है. और मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ. और इसी टेंशन में से, इसी क्रिएटिव या एंटेगनिस्टिक टेंशन में से कुछ निकलेगा या कुछ निकल रहा है. तो ये कल्चर रिफ्लेक्ट्स the stories we tell ourselves about who we are and vice versa. जब आगे फ्यूचर की बात करें, so how do we encourage the youth to take part in the entertainment industry? How do we make it easier for them to take part? यूथ तो बढ़ी जा रही है पार्ट लेने के लिए. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चारों को एंट्रियां नहीं मिल रही. वो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो अगर वाकई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है तो इट्स अ करियर. नाउ इफ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, फिनिश योर एजुकेशन एंड गेट इनटू इट. Go into it guns blazing and don't look back, because as we all know that if you really want something, the entire universe conspires to make it happen for you. So just but you have to give sacrifices. You can't think कि अच्छा मैं business भी कर लूँगा और साथ में मैं ड्रामा भी कर लेता हूँ. ये आजकल नहीं हो सकता. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो मैं तो कहूँगी कि belt up and go for it. I would encourage, since we're here at the Punjab colleges, for them to make dramas, acting, performance part of the business, and not simply for the sake of getting into this. मैं चाइल्ड एक्टर था, जोका थिएटर के इन्हीं हॉल्स में होता था हमारे प्लेस, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका सीना तान के चलना, ये बहुत औरत ज़ात की आपको बात. मैं भी कहूँगा जनरली पाकिस्तान में बहुत कावर करके चलते हैं, पर लड़के भी यूँ झुके परफॉर्मेंस आर्ट सीखने से आप अपनी बॉडी को खोलते हो, आप कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ. रिकग्नाइज करना है कि आपके साथ वाला आपका साथी है. It just allows that opening up. So whether you join the entertainment industry or not, I think you become a more confident person. And if your school can help you or your colleges can help you open that up, I think you'll be doing a service to Pakistan to get more confident in Pakistan. Not just the school, your institution, your parents also have to do that. Yeah. The people at home have to support you and say that it's okay to do this. It is not beneath you. It is not घटिया. It's okay to do it. Because अभी भी लोगों की ये मेंटालिटी है कि वो ड्रामे बड़े शौक से देख लेते हैं, फिल्में बड़े शौक से देख लेते हैं, but they look down on this industry क्योंकि कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये काम करें. लेकिन उस्मा जी, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जिस एक्ट्रेस से मैंने बात की है, वो हमेशा जब बैठते हो सेट पे, आप 12-12 घंटे हम काम करते हैं, तो ये सवाल उठता है कि तो परमिशन कैसे मिली. हाँ, आपस में. और हर एक अदाकारा ने मुझे कहा है कि शुरू में बहुत मुश्किल था. माँ बाप ने कहा कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, ये वल्गर है, या हमारी फैमिलीज में नहीं ये लड़कियाँ करती. The minute the woman becomes an earning member of the household, it's all halal. This is literally what every actress says. कि जब मैंने एक बार पहला चेक किया, वो माँ बाप ने कहा जाओ उधर 4 साल जा जी ले अपनी जिंदगी. So that's very good. But ये क्यों है कि जब आप पेचेक लेके जाते हैं फिर सब ठीक होता है, उससे पहले कि ना जी ना, हमारी फैमिलीज में तो ये नहीं करते. मैं इसके अंदर एक कहा यूथ के लिए क्या कहेंगे, मेरा एक अजीब सा कुछ ख्याल है. वो ख्याल, ये जो आज का यूथ बैठा है उनके लिए मेरा ये है कि मुझे लगता है आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पकने नहीं दे रहे. अपनी फ्रस्ट्रेशन को पकने दें. और फ्रस्ट्रेशन आपकी क्यों नहीं पक पा रही, इसकी वजह से. अपनी फ्रस्ट्रेशन पकने का मतलब क्या है? कोई राइटर तो लास्ट ईयर होता है, बिल्कुल कोई भी नहीं बनना चाहता. मोस्टली आप सारे एक्टर ही बनना चाहते हैं. मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो सारे एक्टर बनना चाहते हैं. टिकटॉक से एक्टर नहीं बनोगे. अजय देवगन का म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के गाड़ी संभलने से कोई स्टार नहीं बनेगा. ये चीज़ें आपकी फ्रस्ट्रेशन को पकड़ने नहीं दे रही.
मेरे पास कई यंगस्टर्स आते हैं, हमें मौका चाहिए, हमें ये करना है। जब मैं उनको कहता हूँ कि जाके भाई थिएटर करें, वहीं पे वो भाग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, 2001 के अंदर मैंने यहाँ पे ड्रामा किया था। मेरा पहला, मैं ये वो नहीं दे रहा कि मैं भी ग्रेट एग्जाम्पल नहीं, मैं सिर्फ आपको एक दे रहा हूँ, इस तरह के मेरे पास और भी हैं। आजकल के बहुत से स्टार्स ऐसे जिनको आप जानते होंगे, उन सब की एग्जाम्पल्स भी मेरे पास हैं, जो कि कितना कितना अर्सा पहले थिएटर में काम करते रहे। आई फील दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टेक द राइट रूट, दे वांट टू गो फॉर द शॉर्टर रूट, व्हिच इज ओके, ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं, मगर फिर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आएगा और वो जो लॉन्गर, जो पक्के रूट वाला था, वो आपसे आगे निकल जाएगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन को इसलिए पकड़े दीजिए। इमीडिएट वैलिडेशन सिंड्रोम जो है, इससे बाहर निकले, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया है। आप इंतजार तो करें कि मैं किसी ऐसी स्टेज में पहुंचूं कि मैं ये बात करूं तो इसकी मजा पड़े बात करने का। ये क्या पकड़ के ठा वहीं पे वीडियो है, मैं बात कर दी बस। होता क्या है, आपको 4 लोग आपको लाइक कर देते हैं तो आपको लगता है अच्छा भी बात हो गई। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। इट इज जस्ट लाइक एक राइटर है, वो राइटर एक कॉन्सेप्ट जहन में सोचता है, अब वो मौका ढूंढेगा कि मैंने एक ड्रामा या फिल्म लिखनी जिसमें मैं वो पूरी एनालिसिस और थ्योरी जो है वो बताऊंगा। उसका एक शॉर्टर तरीका क्या है, वो देगा पकड़ के सीधा 4 पीढ़े कर देगा, उसको पता नहीं चलता, मगर वो फ्रस्ट्रेशन जिस तरह उबारे में हवा सुई मारते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। यू नेवर गेट टू दैट स्टेज जहाँ पे जाके आप वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँचते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा ख्याल आपके जहन में आता है जो कि बहुत बड़े तरीके से आप शायद निकालें। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट दिस काइंड ऑफ मेक्स अस डू इट इन अ वेरी शॉर्ट वे। एक ट्वीट कर दी, 100-150 लाइक आ गई, काम हो गया, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थॉट। दैट थॉट वुड हैव बीन देयर अगर आप शायद ये ना करते, तो वो पकती और आप शायद किसी और स्टेज पे पहुंच जाते। ये चीज़ मुझे लगता है हमें सबको सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली नई जनरेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट वैलिडेशन, इस सिंड्रोम से निकलने की ज़रूरत है थोड़ी सी, और थोड़ा सा अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पकाने की ज़रूरत है। पकने के अंदर आपको पता चलेगा, पहले वो आपको तपाएगी, आप नेगेटिव होंगे, आप कहेंगे मुझे चांस नहीं मिलता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता, एंड देन यू विल गो बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज जहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियरली नजर आना शुरू होंगी। जब उस पॉइंट पे आप डिलीवर करेंगे ना, तो वो हथौड़ा बहुत जोर का लग रहा है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। मैं अभी भी जगह मिलती है, आपने मुझे सारे कर रहे हैं, मौला जो हो रही है। अभी परसों ही मेरी बात हो रही थी उस फिल्म के डायरेक्टर से, और मतलब 2014 के अंदर उस बंदे ने मुझे पहली ईमेल लिखी थी जिसके अंदर इस फिल्म की पूरी स्टोरी लिखी हुई है। 2014, वी आर सिटिंग इन 2022, 8 साल वो लड़का पकता रहा। उसके सामने मेरी फिल्में आई, सुपर हिट हो गई, और इतनी फिल्में आई, सुपर हिट हो गई। दैट गाय स्टेड देयर एंड स्टक टू हिज गन्स। उसने बीच में और कोई ड्रामा नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाया, वो सड़ता रहा, पकता रहा। आज जाके जब वो चीज़ सामने आई है तो हम सब चुप करके बैठे हुए हैं, और अब देख लें वो अकेला ही पूछता फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में। Let your frustrations build up. I feel. Ab, I think I will stop with my ridiculous questions and we open it up, audience go for their Q&A. So if anyone has a question, please raise your hand and someone with a mic will come to you. ये front row के साथ। Yeah, a lot of questions, लेकिन I'll use my special privileges. मैं थोड़ा सा बदतमीज हूँगा and मैं आपसे पहला सवाल करूँगा। Then I have a question for Meera and Uzma जी, and जो आपने कंटेंट के हवाले से बात की, रिप्रेजेंटेशन की कमी के हवाले से एंड डिजिटल की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर नहीं लेकिन पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था एक चुड़ैल्स नाम का शो। जिस तरह वो बैन हुआ, पहले लीगली बिक रहे थे, शायद कुछ लोग पैसे भी दे रहे थे और प्लेटफॉर्म को भी, और जिन्होंने बनाया था फ़ायदा भी हो रहा था उनको, और फिर सब ने टॉरेंट करके या स्ट्रीम करके वो देखा, क्योंकि आया कि पाकिस्तान में चुड़ैल्स नहीं दिखाया जा सकता। इसी तरह वासे ने बात की जिंदगी तमाशा की, फॉर रीजंस के वो होपफुली आपने बताया कि आ जाएगी अभी, लेकिन जावेद इकबाल जो एक
एक क्राइम की क्योंकि आप बात करी थी, जावेद इकबाल के ऊपर रियल क्राइम स्टोरी पाकिस्तान में बड़ी देर बाद बड़ी पिक्चर पे आ रही थी, एंड वी हैव टन्स ऑफ दोस अनफॉर्चुनेटली, बट पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल. बट वी सीन कि वही जो मौला जट के साथ शायद एक फर्क तरीके में हुआ, जैसे जिंदगी तमाशा के साथ की सेंसर बोर्ड ने रोक दिया, एंड यू सेट के पुश बैक आता है और आपको कहा जाता है. माय क्वेश्चन टू यू इज दैट the push, there are voices like Bilal Rashadi, there are people like Sarwat Khusar, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं. As lead, I don't want to use the word influencer क्योंकि वो सोशल मीडिया के एज में बड़ा फर्क उसका मतलब आ जाता है, लेकिन as people who have that voice, जो बाकी लोग मुतासिर होते हैं, जिस तरह इस हॉल में बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों से अपनी ओपिनियंस फॉर्म कर रहे हैं. डू यू थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री शायद इतनी वोकल नहीं होती जब इस तरह की कथगने लगती हैं? कथगने तो नहीं हटा सकते, लेकिन कैन वी बी मोर वोकल अबाउट द पुशबैक दैट इज रिसीव्ड, नॉट जस्ट institutionally or in rooms that people don't have access to, but somewhat जब कोर्ट ऑर्डर की शक्ल में कुछ आ जाता है या डायरेक्टिव की तरफ शक्ल में कुछ आ जाता है कैमरा की तरफ से. I have a lot to say on this, but बहुत लंबा फिर हो जाएगा. Yes, people should push back, and I think हमारे actors डरते भी हैं because everybody is connected इस मुल्क में, क्योंकि इदारे काम नहीं करते तो हम we rely on networks of clan and tribe and friends and puppa and saas and bahu and and so in our industry there are a lot of, say, male colleagues I have who have done things to their female partners that I don't agree with. I have privately complained. I'm talking about now the micro stuff. I'll get to the macro. अब मैं हर चीज पे ट्वीट करूं, अगर मैं करूं कि वो कहेंगे ये जो है ना, ये मीरा सेठी, ये बहुत XYZ है, इसके साथ मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा इसके साथ काम नहीं करना, ये हर चीज पे बोलती है, इसको तो इस इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए, ये अपने आप को समझती क्या है, ये क्या फेमिनिस्ट बन गई है, ये औरतें हैं जो औरत मार्च पे जाती हैं. मैं तारा जमील से जाके कहता हूँ कि इन औरतों के खिलाफ, और फिर पूरा एक शुरू हो जाता है, राइट? So it's not so much that you have to pick your battles, but you kind of do. And I know a lot of people who behind closed doors will say, "Yaar, what is so and so doing? यार अब कुछ कह दिया तो वो फिर उसका भाई है, वो प्रोड्यूसर है, तो वो कैसे होगा?" So that's one thing, talking about just, in terms of issues and in terms of toxic colleagues and so on. Behind closed doors ये सारी बातें होती हैं. आपका दूसरा सवाल था about institutional. The thing is, इधर I hope I can say this. I think ये जो हमारी एक anxious obsession है ना with showing a positive image of Pakistan, I think we need to very respectfully step back from that and take a deep breath. Where does this anxiety come from? If we were, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, जो हम हैं, तो ये जो anxious obsession है कि उन्होंने पाकिस्तान का गंदा image दिखा दिया. Why are you washing our dirty laundry in the West? This is coming from a place of deep anxiety. Let this anxiety go. Our pop culture speaks for us. Our songs become global phenomena, right? मौला जट हैं, हमारे stars हैं, Nobel laureates हैं. Celebrate करें उनको अलग क्यों करते हैं, उनको ostracize क्यों करते हैं हम? तो फिर एक culture of fear create हो जाता है. इस culture of fear में मैं जितना मैं बोल सकती हूँ मैं बोलती हूँ. फिर मैं भी सोचती हूँ कि यार अगर मैंने ये कह दिया तो मुझे कल काम नहीं मिलेगा. ऐसा है. So I think we should step back from this culture of anxiety, this obsession with showing a positive image. आप एक quote unquote negative image से भी एक message, negative image नहीं, मतलब कि एक हकीकत से message भी तो दिखा सकते हैं ना. So there's a lot here that we have to unpack, and I think we have to look inside ourselves in a very honest way and have an honest reckoning with who we are. Wholeheartedly agree with everything you said. I really have nothing to add to this. She's said everything. I have a question. I'm going to build up on, okay, so I'm going to give the reference of Chudel, but in a different context. So you were talking about Maula Jat ka ek platform already exists karta tha, and then it was built out on it. So moving on to the concept of the platform, हम Netflix की बात करते हैं, by HBO and Hulu and so many others that you and I know about. So when we talk about the trajectory of basically what this session is about, कि पाकिस्तान की entertainment industry किधर जा रही है. So Chudel, content aside, so we're not talking about the context of the content,
लेकिन अगर उस किस्म के प्लेटफॉर्म्स या पीपल आर अवेलेबल टू मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट, दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट. So are we as an industry doing something to create a platform that is based primarily for the Pakistani content and it is not YouTube? It is not. YouTube. We're not talking about YouTube, but actually. Okay, no, we are not. Yeah. I don't think एक दो छोटे बने हैं हमारे, मुझे नाम नहीं इस वक्त, iFlix और हाँ इस तरह के एक दो और बने हैं, मगर उसके अलावा हमारा कोई, अगर आप कह रही हैं OTT, तो अब इस वक्त तक एज वी स्पीक हमारा कोई OTT नहीं है, और लाइक Amazon और Netflix और Disney और एनीथिंग, वो हमारा नहीं है. और साथ ही साथ ये बताना चाहूँ कि Disney, Netflix या Amazon हमें हमारा पाकिस्तानी कंटेंट अपने किसी भी उस पर चलाने को भी तैयार नहीं है, and that is only and only because of political reasons, nothing else. Well, we should, well, technically the businessmen need to think about this, क्योंकि ये बहुत Amazon या Netflix एक बहुत बड़ी business proposition है. तो अगर कभी इस फील्ड के अंदर भी एमनेस्टी का अनाउंस कर दिया जाता तो शायद यहाँ भी बहुत से बिजनेसमैन होते जो कि काम कर रहे होते. वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो इस वजह से आपको उस किस्म के बिजनेसमैन नहीं नजर आते एंटरटेनमेंट फील्ड में. Well, a little on a different tangent. I think I'm an avid watcher because I think what happens is when you have time to kill or time to do things, other things, you're doing a lot of mindless watching. So I feel कि हमारा जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा mindless watching की तरफ हमें push करता है. So I remember from my childhood, and I'm really ancient, that there were plays where a whole long play would be based on a dream of someone, of a fantasy of someone, which led to a big subliminal message. Now we don't see that content. We see everything in your face. Be it feud at home, or be it like a political feud, or be it a romantic relationship. Everything is just so in face. Nothing is left to the imagination. So don't you think that in this world, because I see with the OTT platforms, there's a lot of content which is not definitive of any outcome. It just gives you a feeling of thinking whatever you want as a viewer. So don't you think we should move towards that? Because I feel as a mother of teenagers, they're very open to that. We may be very definitive, but they're not. So what is your take on that as a conclave altogether, all the esteemed participants of the conclave? I think definitely इशारों में बात अक्सर ज़्यादा किया जाती है, silence. So when it comes to, I think especially for people who are writing, it makes a lot of sense to think through what's the heart of your story, and then maybe, I think from what you're saying, weirdly मेरे दिमाग में Iranian cinema is coming into mind, where वो भी एक ऐसा मुल्क है, ऐसा माशरा है जो कि बहुत पाबंदियों से गुजरता है. आजकल तो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, औरतें चला रही हैं, बट जनरली वहाँ पे हमारे से ज़्यादा confines हैं. I don't know if we're a society, but we're a country in terms of at least head covering, etc. And two actors can't, a male and a female actor can't touch each other on screen, can't be seen in the same room together without a third person. But within those walls, they create global cinema because they've recognized शायद ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर ही बेस्ट शायरी निकल गई थी. जब दीवारें खड़ी हो तो फिर आप उन दीवारों को भर देते हो, जब बात कह ना सको तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है हर पास. So we do have that space, we do have an opportunity. I think as storytellers, maybe the confines that we live in should allow us to, मैंने कहा, अपनी frustration को और पकाएं. शायद हम उसको पका के कोई बहुत beautiful चीज़ निकाल सकें. And I would really urge the students here today to take Vasa's advice and use these walls around us. Of course, we want to break them down, but there's also an opportunity to use them for our artistic output. Okay, I think if no one has anything to add there, we should. Well, okay, our panelists are running out of time, so I'm afraid we can't.
Okay, cool. Can we get a mic to her, please? मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या स्टेज ड्रामे और फिल्म फेस्टिवल्स का ज़माना ख़त्म हो गया? Where, you know, especially film festivals where you could see French movies and Italian movies and Iranian movies. What happened? Well, clearly, ma'am, it's not happening. खत्म तो हो चुका है। और स्टेज ड्रामा आई थिंक जिसका आप जिस तरफ रेफर कर रही हैं वो वाले अब थोड़े कम होते हैं, मगर वैसे स्टेज ड्रामा बहुत होता है। वो स्टेज ड्रामा है या नहीं ये बिल्कुल आउट है। आप सरप्राइज होंगे कि पंजाब के अंदर ही एक रात के अंदर कितने लोग ऐसे थिएटर हॉल्स के अंदर स्टेज ड्रामा देख रहे हैं। वो जो भी है वो मैंने ऐसा कहा कि वो और बहस है, लेकिन स्टेज ड्रामा तो हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल की जहाँ तक बात है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। Okay, so I think on that note, we will draw here. Thank you to our panelists. Thank you, Arsalan.